Good morning, dear students. In previous video, we have already learned how to compare the decimal numbers. Now let us learn today how to arrange decimal numbers in ascending and descending order. So let us start ascending order, ordering the numbers from the smallest to the largest. Students, ascending order में numbers को smallest to largest के फॉर्म में अरेंज करते हैं. सो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड इट. क्वेश्चन 1, 2.03, 1.01, 3.04, 0.02. स्टूडेंट, एज वी ऑलरेडी लर्न कि नंबर्स को पहले उसके इंटीग्रल पार्ट यानी कि होल नंबर से कंपेयर करते हैं. सो इन फर्स्ट नंबर integral part is 2, and in second number integral part is 1, and in third number integral part is 3, and in fourth number integral part is not given. So it means fourth number is smallest number क्योंकि इसमें whole number नहीं दिया है. Then उसके बाद का smallest number होगा 1.01 और third smallest number is 2.03 and the largest number is 3.04. So here 0.02 is smallest number and largest number is 3.04. Now we have 2.03 and 1.01. अब आपको पता है फर्स्ट नंबर में होल नंबर 2 है and in second number होल नंबर is 1. तो हमें पता है 2 is greater than 1. So it means 0.01 is the smallest number and the second smallest number is 1.01. So let's write ascending order. So here 0.02 is smaller than 1.01, is smaller than 2.03, is smaller than 3.04. Now let us take one more example. Question 2, 91.21, 91.211, 91.212, 91.213. So student, as you can see here, these numbers are not like decimals because here in first number we have only 2 decimal places. See here, and the remaining numbers having 3 decimal places. तो हम पहले इसे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, लाइक डेसिमल. सो 91.21 के आगे हम एक 0 लगा देंगे तो इसकी भी डेसिमल प्लेस इक्वल हो जाएगी. एंड देन 91.211, थर्ड नंबर इज 91.212, 91.213. नाउ लेट अस अरेंज द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. तो सबसे पहले हम उसकी होल नंबर की डिजिट को चेक कर लेते हैं. एंड हियर होल नंबर इज सेम इन ऑल नंबर्स. सब पे होल नंबर सेम है. सो वी विल कंपेयर अकॉर्डिंग टू देयर डेसिमल प्लेसेस. एंड हियर यू कैन सी द 10th प्लेसेस एंड 100th प्लेसेस हैविंग सेम डिजिट. सो अब हम कैसे इसे कंपेयर करेंगे? सो वी विल सी द नेक्स्ट प्लेस दैट इज 1000th प्लेस. और यहाँ पर फर्स्ट नंबर में 1000th प्लेस की डिजिट 0 है. And in second number 1000th place digit is 1, and in third number 1000th place digit is 2, in fourth number 1000th place digit is 3. So as you know 0 is the smallest number, 0 सबसे small है and 3 सबसे big है. और इसके बाद 1 और 2 में 1 small है और 2 big है. So let's arrange the given number in ascending order. Ascending order. So first number is 91.210 is smaller than 91.211, is smaller than 91.212, is smaller than 91.213. Now let us see descending order. Descending order, ordering the numbers from the largest to the smallest number. Students, descending order में हम नंबर्स को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की फॉर्म में अरेंज करते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल. एंड द नंबर्स आर 4.331, 0.222, 91.232, 101.231.
Students, here you can see all the decimal places having the same number of digits. It means these are like decimals. So let's arrange in descending order. Descending order. As you know कि सबसे पहले हम होल नंबर के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं, तो फर्स्ट नंबर की होल नंबर की डिजिट है 4 एंड इन सेकेंड नंबर होल नंबर इज नॉट गिवन एंड इन थर्ड नंबर होल नंबर इज 91 और फोर्थ नंबर में होल नंबर है 101. तो आपको पता है 101 ही सबसे लार्जेस्ट होगा, तो पहले हम क्या लिख देंगे 101.231. ये किससे लार्जेस्ट है 91 से, तो 91.232 और इसके बाद का लार्जेस्ट नंबर है 4.331 एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 0.222 क्योंकि इसमें होल नंबर नहीं दिया हुआ है, तो यही सबसे स्मॉलेस्ट होगा. So students, this is how you can arrange the given decimal numbers in ascending and descending order. I hope your concept is clear. Now it's practice time and your questions are here. So pause your video and please solve it and we'll meet in next video. Till then, thank you. Bye-bye.